What's up, everybody? How you doing? This may seem a little odd when you look at this visually. This is a public reaction to Uri, and unfortunately, I wasn't able to see the movie here. It was in very limited release. It was at a place in Tempe for 2 nights that I just could not make because of life, right? And this video is in partly English, partly Hindi. I asked Rishikesh if he could give me some subtitles for it because the guy's speaking way too quick for my Hindi ability, and he did. So what I'm watching has subtitles to it. What you're seeing doesn't have subtitles to it because I'm not sure how to do that yet. Because this internet thing is too advanced for me. So let's go ahead and take a look at it. I'm going to go ahead and see if I can find where I did with it. All right, here we go. So this is Uri the Surgical Strike movie public review special screening starring my man Vicky. Let's take a look at it. वो सारे सवाल बेमानी और बकवास थे। कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर शक भी जाहिर किया। इस देश के रहने वाले राजनीतिक लोगों ने, पप्पुओं ने, ये देशद्रोही जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं, इन सारे हरामखोरों को इस देश में कोई जगह नहीं है। करंट एरा में सबसे बड़ी इंसिडेंट हुई थी हमारे देश को लेकर। आपने वो फिल्म देखी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, कैसी लगी आपको सर? It is a very good film. I mean, after Hakikat, this is the film which really, portrays Indian Army in the most realistic fashion. And not only that, it's a very well-made film. It's a very well-performed film, and it really, it should be watched by every Indian. Every Indian who believes in this nation, who is prepared to live and die for this nation. For traitors probably this film will not work, but for those who love their country, those who care for their nation, those who care for their culture, for them, it's a very important film. They should watch it. ये एक ऐसा इंसिडेंट था सर, काफी सवाल भी खड़े किए गए थे। वो सारे सवाल बेमानी और बकवास थे। कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर शक भी जाहिर किया। इस देश के रहने वाले राजनीतिक लोगों ने, पप्पुओं ने इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में शक जाहिर किया। वो सब देशद्रोहियों की जमात है। वो लोग जो है जानते नहीं हैं अपने देश की सेना को, और वो लोग जो अपने ही देश को नीचा दिखाते रहे हैं। ऐसे सारे लोगों को राजनीति से बाहर कर देना चाहिए और लाइन में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। ये देशद्रोही जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं, इन सारे हरामखोरों को इस देश में कोई जगह नहीं है। सर क्या कहेंगे, ये बेस्ट ट्रिब्यूट है हमारे जो मार्टिस सोल्जर्स हैं और एक करारा जवाब? इट्स ट्रिब्यूट है, और हम इस फिल्म को देखना असली ट्रिब्यूट होगा। इस देश की जनता को जब ये फिल्म देखेगी तो उसको सैल्यूट करना चाहिए, अपने देश की आर्मी को, अपनी देश की सेना को, देश की सेना की जय बोलनी चाहिए। सर बहुत सारे यूथ आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनसे आप क्या कहेंगे? यूथ से ये कहना है कि देशभक्ति का जज्बा जो है वो एक सही जज्बा है। वो अगर नहीं रहेगा हमारे अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने जीवन के अंदर। ना हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे, ना अपना व्यक्तित्व विकास कर पाएंगे। इस देश के लिए लड़ना है, मरना है, इसका विकास करना है, और इस देश के लिए कुछ भी करने का एक जज्बा मन के अंदर होना चाहिए। सेल्फ सर्विंग, सेल्फिशनेस जो है ये बहुत हो चुकी। अब थोड़ा सा हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। छोटे छोटे कोई चीज़ें कोई हमें दे देता है और हम उससे स्वेड हो जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, अपनी सेना के ऊपर शक जाहिर करने लगते हैं, हम देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करने लगते हैं। ये सारी बकवास बंद होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, कई बार क्या होता है कि विचारधारा हमारी देश से कई ज़्यादा ऊपर हो जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जो विचारधारा देश से ऊपर है वो विचारधारा नहीं है, वो दिमाग की सड़ांध है। वो दिमाग में जो है कुछ एक सड़ती हुई कोई चीज़ है। देश से ऊपर क्या विचारधारा हो सकती है? समाज से ऊपर क्या विचारधारा हो सकती है? देश है तो हम हैं, समाज है तो हम हैं। उसके लिए लड़ना मरना, उसके लिए जो है सब कुछ नुकसान करने की कल्पना मन में रखना, ये रहना चाहिए, जज्बा मन में रहना चाहिए। लास्टली, हाउ मेनी सर आउट ऑफ 5? I say out of 5, 10. जी सर। I'm saying that every Indian must watch this film. 10 out of 5. It's the duty of every Indian to watch this film. Okay, क्या आप कहेंगे कुछ पॉलिटिकली इस फिल्म का कुछ इम्पैक्ट होगा? क्योंकि ये जो बहुत बड़ा नहीं होगा तो दुख की बात होगी। इस फिल्म का इम्पैक्ट तो होना ही चाहिए। हर फिल्म
और देशभक्ति सारी दुनिया में, मतलब कि अगर हमें खड़ा होना है तो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर रहेगी तो हम कहाँ से खड़े होंगे? It's fabulous. I think Vicky Kaushal has done a fabulous job. He outperforms himself with every film. With Razi, I fell in love with his character. With Uri, he has taken it a notch up, and you'll come out wanting to salute India in pride. Is the movie very well executed, and did he stand as per your expectation? Yeah, so honestly, I've heard a lot about the surgical strike, but I wasn't sure about how it's going to be executed. So I think it was very well edited to showcase the right moments, to showcase the fast-pacedness of the film, and also I'm sure it must have happened over a long period of time, the whole planning and stuff. The execution has been beautifully done. Fighting scenes? Sorry? Scenes कैसे थे? कौन से फाइटिंग सीक्वेंसेस? बहुत सारे हैं. सो फॉर अ एक्शन लवर you wouldn't be disappointed. Very good and very well done. It's a good tribute to our soldiers. Absolutely. I think this film only goes to show the spirit that India has as a nation, right? And to also showcase that we are no less than anyone. There is a scene in the film, but there is a scene in the film where they say हम Indian soldiers हैं और Indian army यही कर सकती है. So that is the moment. And any message to all the fans, all the viewers who are eagerly waiting to watch this movie? Please go ahead, watch Vicky, show him some love. I'm sure this is going to be a super hit, and he deserves all the love. How many stars out of 5? 4. मुझे ना एक्चुअली ये बहुत अच्छी, हम लोग ने सुना था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं मालूम था कि ऐसा इतना सब हुआ था और इतनी सक्सेस हुआ, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक इतनी सक्सेस हुई थी. बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, एक अलग हटके फिल्म है. मुझे ऐसा लग रहा है 2018 और 2019 है ना, एक नया इंडस्ट्री में ना वो कहते ना नया पैगाम लाया है कि एक से एक फिल्म देखने को मिल रही है. ये एक से एक फिल्मों में से एक है. ये एक से एक फिल्मों में से सबसे बेस्ट है, मैं बोल सकती हूँ. 2019 का शुरुआती धमाकेदार. मतलब ऐसा लगता है अंधाधुन देखी, स्त्री देखी तो वो थोड़ी डिफरेंट थी. ये देशभक्ति के ऊपर फिल्म है और पिछली ना 2-3 जितनी भी देशभक्ति की फिल्में रिलीज हुई वो फ्लॉप हुई है. वॉर के ऊपर, फाइटिंग के ऊपर, और इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, कई फिल्में आई हैं. हाँ, उससे मतलब वही मैं बोल रही हूँ, हकीकत और बॉर्डर के बाद ये फिल्म पब्लिक जरूर लाइक करेगी. हाँ. विक्की कौशल का परफॉर्मेंस कैसा लगा? विक्की कौशल के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी अच्छी एक्टर है ही. वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं. एक्चुअली वो इसमें विक्की कौशल नहीं लग रहे थे, वो इसमें लग रहे थे मिलिट्री ऑफिसर. हाँ, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है अपने नाम की भी. वो हर कैरेक्टर में इतने घुस जाते हैं कि उसी कैरेक्टर से वो पहचाने जाते हैं. और बताइए, और कनेक्ट हुई, आप समझ में आ रहा था चीज़ें जो एग्जीक्यूटेड लग रहा था आपको सब चीज़? मुझे सबसे अच्छी बात फिल्म में वही लगी कि ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं डाला गया. एकदम नेचुरल, कोई रोमांस नहीं दिखाया, कोई एक दूसरे को देख रहे हैं लाइक उस तरह से कुछ भी जैसे हिंदी फिल्मों में होता है जी, वो नहीं था. मतलब एक डिसेंट फिल्म थी. बॉलीवुड की फिल्म है, उससे अलग है. उससे अलग है. मतलब ऐसा बॉलीवुड का जो हमेशा रहता है कि नहीं हमको थोड़ा पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए डालना है, लेकिन इन्होंने वो सब चीज़ नहीं की. इन्होंने एक टॉपिक पकड़ा तो उसको एंड तक उसी को निभाया. कह सकते हैं कि बहुत ही एक अच्छी श्रद्धांजलि मानी जा सकती है इस फिल्म को हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं उनके लिए. सोल्जर्स हमारे ऑफकोर्स सोल्जर्स तो मतलब सबसे रिस्पेक्टफुल है. मतलब ये फिल्म देख के भी और वैसे भी पता चलता है कि रियल हीरोज़ तो वही हैं जो हम लोगों को इतनी मुसीबतों में उनके मतलब एक बोलते हैं ना, उनके लिए इज्जत और ज़्यादा पैदा हो गई ये फिल्म देखने के बाद. हाँ. 3 में से 4. I'm going to stop it right there because I have a lot of thoughts and I don't want to turn this into an hour-long video. But you can go Google that review and see all of them because it's about there's probably 8 minutes left of these public reviews, which is a brilliant idea to do these public reviews like this. A couple things here. I think that this may be a start in a new genre of storytelling in India. There's nothing wrong with the masala. I enjoy it a little. When I first saw masala in films, I was like, this is kind of weird. Why is everybody singing and dancing and everything? And I wasn't sure if they were going to do that with this film, and I'm really glad that they didn't because this is such a serious topic. This is a step into a very dramatic storytelling. And it's good to know that there wasn't like this added romance or whatnot that is typically in Indian films. I think
again, not that that stuff's wrong, but I think that just shows another venue to go and give a review of something, to go give a storytelling event like that. So I think that's very, very good. And I look forward to this may be a blueprint, I think, for patriotic films to come forward. Now, this next point is kind of a mixture of a couple things. People will ask me a lot of times, why you love India, you know, blah, 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 why you love India, why you love India, you're doing it for the money, you do it. Listen, Indians have been very kind for me. I've done a lot of videos explaining why I love India. When I was younger, early 20s, I was surrounded by an Indian community that looked after me, that helped me a lot. Sikhs, Hindus, Muslims, they were all Indian, and they really, really were very kind to me when I was in a place that needed help. Very kind to me. And so that's the affection bond that happens. The other thing that I love about India, not the Indians, but India, is there's a sense of patriotism. There's a sense of loving the nation, wanting to see the nation succeed, to lift up. Like, Indians seem very proud when one of their fellow countrymen achieves greatness, that everybody kind of puts them on their shoulders and lifts them up, and they take great pride in it. And I remember when America used to be like that, and America is no longer like that. So I see this, and I remember, like, oh, what it was like. Oh, what it was like. And I find it very beautiful and very charming, and something that I hope that you guys hold dear to. Apparently I'm moving too much for the camera. My apologies. I'll stand still. Something that I hope you guys hold on to and don't let go, because it's such a precious, precious thing. I guess I'm probably going to be, you know, let me find this on DVD now, or maybe one of the streaming services will pick it up. But I can't wait to see this. I love it. He gave it 10 out of 5 stars. You know, or was it 4 stars? 10 out of 4, 5 out of 4. That's pretty good. That's good stuff. Peace and much love, man. Please like and subscribe, will you? And hit and share the video. I'll catch you guys later. Peace.